Okay. All right. Okay. So today's topic is, आज का टॉपिक है हमारा setting your goals. All right. तो अभी हम कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी हम 1 2 3 4 5 लोग आ गए हैं. Okay. All right. Okay. अगर वीडियो पे आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा. But no issue at all. You need to be, but you need to be whatever we are discussing. We need to practice on to that. तो आज थोड़ा सा हम इस मोड पे जाएंगे कि हमें जो है अपने गोल्स को कैसे सेट करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन बिफोर वी बिगिन द सेशन, एनीवन वुड लाइक टू से कि आप में से जितने भी लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, have we ever tried to set the goals? और किन्होंने किया है और कितना सक्सेस हो पाए हैं उसमें? All right, so anyone, Pritam ji, Ashmi, Meena ji, anybody can unmute and no, tell. जब पढ़ते थे तब माँ बाप ने डाल दिया था कि इंजीनियर बनना है, तो वो गोल बना दिया आपने. ओके. तो वो इंजीनियरिंग कर ली, फिर अच्छा. बाहर जाना था, ये भी गोल बना लिया, तो भी बन गया. तो अच्छा. यूके भी हुआ है, वहां से भी डिग्री ले ली. ओके. यही गोल थे. उसके बाद तो जिंदगी अच्छी तरह से गुजारनी है, बस यही चल रहा है. अच्छा. तो उसके बाद कभी आपने जो गोल बनाया उसको अचीव किया, आप ये कह रहे हो, राइट? हाँ, उसके बाद फिर नौकरी के थे, ये तो करते ही आगे जिंदगी भर टाइम टू टाइम चलता रहता है. ओके. सो अब कोई गोल नहीं सेट कर रहे. अच्छा, अब कोई गोल नहीं सेट कर रहे. ओके. तो आपको क्या लगता है प्रीतम जी कि अगर हम अपने जीवन में जो भी हमारी हम जहां पे जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हैं अभी, राइट, वेयर एवर वी आर एज ऑफ नाउ, राइट, सो विल इट बी गुड अगर हम अपने लाइफ में गोल सेट कर लेंगे? तो विल इट बी ए बेटर लाइफ फॉर अस? एक अच्छी लाइफ हम और जी पाएंगे क्या? गोल तो अच्छी लाइफ के लिए सेट करते हैं, राइट. सो इम्पैक्ट होगा उसका, राइट, इन ओवरऑल इम्पैक्ट इन आवर लीडिंग द लाइफ, इजंट इट? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है. एनीबडी कैन आंसर. लेट्स मेक इट लिटिल मोर इंटरैक्टिव. इसी से रिलेटेड ये है कि गोल क्यों सेट करने हैं? गोल क्यों सेट करने चाहिए या क्यों करने हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि गोल सेट करना ही करना है? अगर नहीं भी करना, लाइफ तो चल रही है ना. कोई भी आंसर दे सकता है. अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, अपनी अचीवमेंट के लिए होता है, अपने बस के लिए होता है. अच्छा. ओके. सेटिस्फेक्शन के लिए होता है. और कोई थॉट? वेलकम रजविन टू द सेशन. We are talking about setting the goals, setting up the goals. Okay, I'd like to come in and so it's a sort of a determination that at whatever stage and age you are in life, if you set goals, then that's a focus that you have, and the focus is very important because you do not lead a life of just anyhow and anything. You have some set rules by which you develop. Like I had set a rule in this year that I will read so many books. I'm already on the way. It's just April, So I'm finishing one book, starting another, finishing one, starting another. So the aim is that am I following it? So once if I follow one goal, then I can set the other goals also. Okay. Very well said, I think Samina ji, right? Yeah. Yes. Okay. Very well put. Very well put. So we'll take it forward from here. Okay. So let it ponder into more why set goals, right? So let's go ahead. Why set goals? Okay. So सबसे पहला, setting goals give you a long-term vision. जो long-term vision है वो हमें समझ में आता है कि क्या हमारा आगे आने वाले हमारे जीवन में क्या हमारा विजन हो सकता है या है. इट गिव यू अ क्लैरिटी, राइट. अगर हम अपने गोल्स को सेट करते हैं तो एक विजन हमारा क्रिएट होता है, राइट. और क्या होता है? इट फोकसेस योर
acquisition of knowledge and helps you to organize your time and resources but in a better way, right? And आने वाले जीवन में आप कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं उस गोल को सेट करने के लिए, राइट? या सेट करने के साथ साथ आपकी जो नॉलेज है, एक्वायर्ड नॉलेज है, हमारे नॉलेज तो हम हर दिन ले रहे हैं ना, नॉलेज तो हम हर दिन ले रहे हैं, बट उसको अब कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने टाइम और रिसोर्सेज के साथ. So it gives you that kind of a perspective if you set the goals in your life. Wherever you are, whatever stage of life you have or you are having right now, right? Goal has to be set, right? Otherwise, there will not be much impact in your life. आप इस धरती पे आए हो तो कुछ impact करके जाओ ना, right? So by setting sharp goals, clearly defined goals, you can measure and take pride in the achievement of those goals. अभी जैसा मैंने आपको बताया है कि give some impact to others, right? Or of course, your sense of achievement will also increase, right? और ये सारे जो है you'll be able to measure your goals actually when you start setting the goals. So अभी अब measurement की भी हम बात करेंगे इसी सेशन में, and you will see forward progress in what might previously have seemed a long pointless grind. So पहले जो आपको लगता था कि एक व्यर्थ सी लाइफ है या जस्ट कैरी ऑन हम कर रहे हैं अपनी लाइफ को, so you will see your progress, right? So that is why it is important to have goal setting in place, right? And you will have more confidence, more self-confidence, as while you set your goals, you will recognize your own ability and your own competence, and so that you will be by which you will achieve your goals. So these are some of the thoughts which I would like to share with you, that why goal setting is important, right? Now in today's session only we'll try to figure out your goals and we will set those goals. आज हम एक शुरुआत कर देंगे. जो लोग इस पे काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं स्टक है, सोचते हैं कि हमें गोल सेट करना है, राइट? लेट्स से वी आर इन द मिड ऑफ 2023 ऑलमोस्ट, राइट? एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो जो बिजनेसमैन है उन्होंने अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर का गोल सेट करना है, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने गोल सेट करने हैं. हम रिजोल्यूशन पास करते हैं ना जनवरी में, बट वो हम अप्रैल तक आते आते जो है वो फुस हो जाते हैं, right? So we need to work on that. So these are the few thoughts which I wanted to share on setting up why set up goals. All right. अब 2-3 लेवल्स पे आप गोल सेट कर सकते हो, राइट? अब वो 2-3 लेवल्स कौन से हैं? लेट अस फिगर इट आउट. स्टार्टिंग टू सेट पर्सनल गोल्स. सो मैं पर्सनल गोल्स को यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड इसमें हम आगे आने वाले टाइम में अगर आप सब कहेंगे तो हम बिजनेस गोल्स को भी आगे ले सकते हैं, इसको और डीप डाउन किया जा सकता है. सो हाउ द ग्रुप फील्स, I will take it further also. So it's going to be interesting sessions. So I would request that whoever is not coming in these sessions, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो that will be better for them, because these are the things which they can also learn and implement right away. Okay. So starting to set personal goals. So you set your goals on a number of levels. What are those levels? Let us see that. You set your goals. First, you create your big picture, right? एक बड़ी तस्वीर बना सकते हैं हम या बनाएं. First, you create your big picture of what you want to do with your life. आप अपने जीवन काल में क्या करना चाहते हैं उसका एक बिग पिक्चर बनाएं. मे बी लेट्स से डाउन द लाइन 10 साल, 5 साल, लेट्स से 10 years from now, right? And identify the large scale goals that you want to achieve, right? So आप विजन अपना क्रिएट करें, उसको क्रिएट करते करते विजन और मिशन की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिग पिक्चर बनानी जरूरी है. बिग पिक्चर मींस यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ दैट your goals you can achieve those goals, right? So that is number one. Now going forward,
Then you break these goals. Large scale goal पहले बना लिया आपने, big picture आपने ली, and then you break these goals into a smaller goals, smaller targets that you must hit to reach your lifetime goals. उसके बाद हमने big picture बना ली, एक large scale goal ले लिए, उसके बाद उसको छोटे छोटे goals में हमने उसको तोड़ दिया, right? फिर आप इन्हें जब छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ते हैं तो हम उन बड़े लक्ष्य के ऊपर पहुंचने में हमें आसानी होती है, right? So step by step, if it follow, we will achieve our long term or large scale goals. There are certain number of levels, and then finally once you have the plan, you start working on it to achieve these goals. So आप जब आपके पास जब बिग पिक्चर आ जाती है, लार्ज स्केल गोल्स आ जाते हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर देते हो, आपके पास एक प्लानिंग होती है, और इन प्लानिंग के साथ आप उन गोल्स को अचीव करते हो, राइट? सो दिस इज द नंबर ऑफ लेवल्स पे आप जो है गोल्स को सेट करते हो. एटलीस्ट यू स्टार्ट सेटिंग द गोल. अब इसका प्रोसेस क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस आल्सो, प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स. अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स जब मैं बोलता हूं, तो वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स बाय लुकिंग एट योर लाइफ टाइम गोल्स. ओके, लाइफ टाइम गोल्स की कैटेगरी अभी आपके साथ में शेयर करूंगा. उसमें से आप कुछ गोल्स ले सकते हैं, उसमें से आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए कि कौन से गोल हमारे को आज की डेट में हमें सेट करने, राइट? सो हम आपके जीवन के लक्ष्यों को देखकर लक्ष्य निर्धारित करने की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं. एंड ये कैसे होगा? Then we will work down to those things that you can do. Let's say you can do in next 5 years, right? Next आगे आने वाले 5 सालों में हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर will break it down to the next year. अगले आने वाले साल में क्या कर सकते हैं, अगले आने वाले महीने में क्या कर सकते हैं, अगले आने वाले वीक में क्या कर सकते हैं, और आज क्या कर सकते हैं, so that we can start moving towards them. That is the process. That is the process we can start. In terms of, first we will look at your lifetime goals, right? I'll give you the category of goals which you can identify, right? We will talk about it, and we can any clarification we can do it here, and then we will start working on कि उसको smaller parts में, जैसे मैंने बोला था, कैसे उसको उस goals को हम अब पीरियडिकली जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में क्या करना है, आगे 1 साल में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में क्या करना है, और आज क्या करना है. सो two step process. I'll give you 2-step process. Now understand this process well, and any clarification, any interaction, any sharing you want to do, you can do it, right? You can ask me to stop, I'll stop, and then we will discuss. There's no issue at all. So I would invite you to initiate 2-step process. What is that process? Now, step 1 is setting lifetime goals. Abhi maine lifetime goals ki baat ki thi, right? Now I'll give you some category of lifetime goals. So पहला क्या करना है अपने को, lifetime goals जो है वो हमें set करने हैं. Now the first step in setting personal goal is to consider what you want to achieve in your lifetime. आप क्या achieve करना चाहते हो, इस पे थॉट डालना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट? एंड सेटिंग लाइफटाइम गोल्स, जब आप लाइफटाइम गोल्स सेट करते हो तो इट गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो. आपकी डिसीजन मेकिंग पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, राइट? सो इट विल गिव यू द ओवरऑल पर्सपेक्टिव that will shape other aspects of your decision making, thereby affecting the way you lead your life. So आपकी आने वाली लाइफ में कितना गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है, आप ये देख सकते हैं. So let's work on this setting lifetime goals. अब lifetime goals में क्या क्या आता है, right? So to give a broad balanced coverage of all important areas of life, जो भी आपके important areas of life हैं, try to set goals from them. In some of the Sandeep ji, if I may add, yeah, please go ahead. If I may add, setting up goals
requires smart specific. S is specific. Yes. M is measurable. Yes. A is attainable. Yes. R is Relevant. realistic, and T is tangible. Now, It is time bound. Yes, of course. when we are setting goals, I agree with you. Inclusion in lifetime goals, because I have certain goals for my career, for everything in life. I'm sure everyone here is the same. So, well said, well said, well given message. Inclusion. So inclusion is the key to success. Without inclusion, there's no success. Thank you. Thank you so much for sharing, Rajvin. And we will talk about the smart goal today, and we'll create that smart goal today, right? So अभी हम करेंगे, अभी हम इसी सेशन में करने की कोशिश करेंगे, right? So inclusion in your lifetime goals क्या हो सकते हैं? Number one, as Rajvin also said, number one, it can be your career, right? What level do you want to reach in your career, or what do you want to achieve? That can be your career related goals, can be set, right? So one is career. Then your financial goals. How much do you want to earn? आप कितना कमाना चाहते हो? And then by what stage, right? And how this is related to your, or it can it be related with your career goals, right? So आप कितना कमाना चाहते हो, किस स्टेज तक कमाना चाहते हो, कैसे कमाना चाहते हो, और ये how it is related with your career goals. So first, career goals can be set, financial goals can be set. Let us say what kind of other categories are it says, and that educational goals can be there, right? We can always upgrade ourselves in learning, right? So is there any knowledge you want to acquire in particular, or what kind of information or skills do you want to learn in order to achieve your other goals? So that can also be a goal. So your education related goals can also be one of your priority, right? It all depends on priorities. We can always prioritize, right? So I'm just giving you the category of goals of your lifetime goals, right? So next one would be family. Then how do you want to be seen by your partner or your members of your extended family? That can also be a goal, isn't it? And then, yes, there can be artistic goal also. Do you want to achieve any artistic goals? Do you want to create something, some some art related goals? Maybe you want to sing, you want to learn singing, you want to learn some instrument or something like that, right? That can also be a goal. And then, of course, attitude, right? is you can take those goals also जहां पे आपको लगता है कि with your mindset something is holding you back somewhere. Is there any part of your part of your mindset which is holding you? Is there anything which the particular way you behave that upsets you? So a goal can be set here to improve those behaviors or those mindsets. Right, we talked about mindset last time, right? I'm sure that you must have done the mindset quiz, most of you who were there last time. So attitude goals can also be set for in your lifetime goals category. And then physical goal can also be part of it. Are there any athletic goals, or maybe physical goals? You want to start exercise, you want to start walking, right? Or maybe relate to your health goals. So are there any athletic goals that you want to achieve, or do you want to help deep into old age? आपकी आगे जैसे आएगी या आगे, तो उसमें health को कैसे आप prioritize कर सकते हो, right? What step are you going to take to achieve that? That goals can also be very, very important for us. Like me, I have decided that I am doing
yoga at least 4 days a week, right? Rest I do walking and all these. So this is my goal this year, that my health should be my priority. So I'm working on that. So I've set the goal that 2023, by end of 2023, I have to lose another 5 to 7 kgs. Okay. Now, in terms of pleasure or enjoyment, how do you want to enjoy yourself? That is also a very, very important goal. So you should ensure that whatever life is remaining for you, right? You have to take care of your pleasure also, in terms of where you want to go, travel, anything else which you want to do for your pleasure, right? So pleasure goals can also be included in your lifetime goals. And then anything which you can want or can do for society or public service. Do you want to make the world a better place? Of course, we call it कि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, और यदि बनाना चाहते हैं तो हमें ये गोल लेना चाहिए कि जो हम उसको कैसे करें, right? So these are the few categories of goals which you can include in your lifetime goals. That is step 1 of setting the goals. Okay, till now, any question, any interaction, any sharing, if anybody wants to do? All right, no response, but okay. All right, let's go ahead then. Now you need to brainstorm. Now we need to brainstorm or what? अभी मैंने बात की, आपको 2 प्रोसेस दिए. एक प्रोसेस दिया है नंबर 1, लाइफ टाइम गोल्स बनाने हैं, राइट? तो दूसरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा. सो इसमें आपको क्या करना है, वॉट एवर लाइफ टाइम में आपने जो गोल्स बनाने हैं, you need to select 1 or more goals in each category. Let's say we've talked about categories, right? You must have seen it, right? अभी मैं आपके साथ बैठ के बनाऊंगा ये गोल्स सारे. Rajvin has talked about smart goals. आज smart goals पे ही काम करते हैं. So select 1 or more goals in each category that best reflect what you want to do. आप क्या करना चाहते हो? Then consider trimming them. जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि एक लार्ज स्केल गोल होगा, लार्ज स्केल गोल को हम ट्रिम करके छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देंगे. देन कंसीडर ट्रिमिंग अगेन सो दैट यू हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट गोल्स जिस पे आप फोकस कर सकते हो, राइट? सो मेजर लर्निंग यहाँ पे क्या है कि आपको लार्ज स्केल गोल बनाने हैं, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू achieve that goal. Otherwise that goal will be just statement, you will not be able to achieve it, right? This is a major learning till now. Am I with you? Yes or no? Yes. Okay, all right. So let's select 1 or more goals in each category, right? And as you do that, as you select any of the goals, now make sure that goals that you have set are the ones that are genuinely you want to achieve. वो genuine होने चाहिए आपके goals, वो genuinely आप उस पे काम करना चाहते हो, हवा में बात नहीं करनी, right? अगर आपने गोल बनाया है तो that genuineness should reflect in your actions also. We'll talk about it. And किसी peer pressure से, किसी फैमिली प्रेशर से, किसी एम्प्लॉयर प्रेशर से, किसी एम्प्लॉय प्रेशर से आपको गोल अपने नहीं बनाने. That should reflect of your goal, your personality, right? And if you have a partner, of course your partner can be a combined goal. Suppose you want to go for a couple goals or family goals or something like that. So if you have a partner, you probably want to consider what he or she wants, but आपका अपना ट्रू सेल्फ वहां निकल के आना चाहिए while setting up the goals, right? Am I making sense? Right? So make sure that you remain true to yourself. So these are the things which you need to brainstorm on this, right?
You may not be able to brainstorm right now, but I have given you a thought, right? Now you have to keep on brainstorming at your end to figure it out. What are your category of goals which you would like to go ahead with, right? And then आपके जो genuineness है वो reflect होनी चाहिए, and then there should not be any pressure, any peer pressure वाले goal नहीं होने चाहिए वो. Otherwise what will happen that you will do for certain period of time, but ultimately you will leave those goals in between. That's 100%. Now step one I talked about. Step one talked about lifetime goals के मैंने बात की. Let us talk about, I'm constantly talking about setting up goals in two parts, one larger scale goal and then the smaller scales goal. So let us understand step two. Step two is setting smaller goals. It's very, very simple. I'm trying to make you understand in such a way where this can be implementable. There are things which are implementable. वो वही चीज नहीं हो पाती है, वहीं पे हम लैक करते हैं. अदरवाइज थियोरेटिकली वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग, हमें नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है, बट स्टिल वी स्ट्रगल. Why? Because we are not able to implement that, because we are not able to find the tools to implement that. So I'm giving you the tools right now. Now setting smaller goals. Now once you have set your lifetime goals, now पहला step क्या था कि lifetime goals set करना है. Now set up a figure out a plan, 5-year plan, maybe 2-year plan, 3-year plan, whatever. I've taken 5-year plan, let us say, क्योंकि हम lifetime की बात कर रहे हैं. तो 5 साल, आज से 5 साल बाद आपका क्या जो है वो smaller goals का plan रहेगा. And then you need to complete if you are to reach to your lifetime plan, right? That is number one. And then come down to then create 1-year plan, 6-month plan, 1-month plan, and then progressively of your आप उसको measure करते रहें और smaller goals को कैसे आप आगे लेके जा रहे हैं, and then you will be able to reach to your lifetime goals. Each of these should be based on your previous plan. जो भी previous plan होगा उसके ऊपर ही ये based होगा, right? And then you create your to-do list, right? To-do list में आपकी वो सारी चीजें आ जाएंगी कि उस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो, सो आपको आज क्या करना है, इसकी एक to-do list बनानी है. To then create a daily to-do list of things that you should do today to work towards your lifetime goals, not tomorrow, today. So every day there will be a to-do list. And then at an early stage, your smaller goals might to be, जैसे अभी समीना जी ने बोला कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, right? So initial stages में आपका जो है thought ये हो सकता है कि in order to achieve your bigger goals or lifetime goals, आप कुछ knowledge इकट्ठी कर रहे हो, by reading some good books or gather information, कि आपको कैसे उस higher level के goals पे जाना है. तो अगर आप ये करते हो, इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड अल्टीमेटली योर गोल सेटिंग विल बी अ रियलिटी, isn't it? So whatever you are doing as of now, in terms of, it may be possible that आप कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे हो, या कुछ और रिसर्च कर रहे हो, या कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, whatever you started. So this will help you to achieve your long-term goals. And finally, you have to have a review plan. Finally, review your plans and make sure that it fits the way in which you want to live your life. So you have to keep on reviewing it. You have to make sure that those goals which you have been making, they are fit in the way which you in your life, the way you want your life to be, right? So this is a two process. Number one process, which I told you, is setting a lifetime goals. Number two is, step two is setting smaller goals, right? इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है.
Once you do it, it will automatically happen. The process will start. You will enjoy the process, and ultimately you will achieve your goals also. Now, it's very important for you or us also, including me, to staying on course. Right? अभी ये मैंने बात तो आपको बता दी, स्टेप बता दिए, categories बता दी. Now, if you keep afloat, if you have to stay on course, otherwise you will derail yourself, right? So once you have started, once you have set up your goals, once you have decided on the first set of goals, keep the process going. As I said earlier, by reviewing and updating your to-do list on a daily basis. Your to-do list is very, very important. How many of you do to-do list? Any responses, please? Anyone? Yeah, yeah, I do it, but not in a very systematic way. Like Okay. I follow my this goals in the day, but now Okay. I set a time, like Okay. 6 is 8 a.m., specific things. And I want to see whether I'm following it or not and why I'm not following. Okay. All right. So Okay. that is, Vinay has also raised the hand. So Vinay is also doing that, right? So to-do list is very, very important. To-do list, अगर आप to-do list पे आपने अपना control कर लिया, तो I think half of the battle you have won, right? And then periodically review the long-term plans and modify them to reflect your changing priorities. ऐसा तो नहीं है जब मैं 10 साल 5 साल की बात कर रहा हूं तो प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं. So let us accept that also and make a room for that, right? ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई है. You have to change. आप चेंज करना चाहो थोड़ा बहुत उसमें आप ट्यूक कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. So that उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको periodically review करना पड़ेगा. So periodically review the long-term plans and modify them to reflect your priorities. And a good way to do is to schedule regular repeating reviews using a computer based diary. कंप्यूटर बेस्ड डायरी अगर आप यूज करते हैं या आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे एप्स आ गए हैं, आपके मोबाइल फोन में एप्स हैं. सो यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग दीज गोल्स एंड स्टेइंग ऑन कोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्रिएटिंग स्मार्ट गोल. रजवी ने अभी बोला था स्मार्ट गोल्स, तो स्मार्ट गोल की बात करी थी. तो सिंपल चीज में अभी आपके साथ करेंगे. अब पहले स्मार्ट गोल को समझ लेते हैं, राइट? इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस. इसको समझ लेते हैं. इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं. बहुत लोगों ने ये स्मार्ट गोल सुना भी हुआ होगा. यहाँ पे हम लोग सारे नॉलेजेबल बैठे हुए हैं, राइट? सो नाउ क्रिएटिंग स्मार्ट गोल्स. अब करना क्या है, कैसे गोल्स होने चाहिए हमें, राइट? हमारे पास गोल्स सबसे पहला तो स्पेसिफिक होना चाहिए. स्पेसिफिक मीन्स व्हाट विल द गोल अकम्प्लिश. वो गोल जो है क्या अकम्प्लिश करेगा, आपका क्या लक्ष्य पूरा करेगा, कैसे पूरा होगा, हाउ एंड व्हाई इट विल बी अकम्प्लिश्ड. स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक गोल. So S stands for specific. And then your goal should be measurable, right? Measurable. How will you measure whether or not the goal has been reached? At least आपके पास 2 या 3 इंडिकेटर्स होने चाहिए कि आप उसको मेजर करो कि आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. अगर गोल मेजरेबल नहीं है तो उस गोल का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. ओके. नाउ A stands for achievable or attainable. Now, क्या ये possible है? Now, ask yourself while creating or setting up goals, is it possible if this goal is attainable? Let us say कि आज some business owner is doing 5 crores a year, और वो कहता है कि मैं 500 करोड़ एक साल के अंदर बन जाऊंगा और 1000 करोड़ बन जाऊंगा. It may not be practical, may or may not be practical, but he has to analyze, right? तो गोल ऐसा रखना है कि वो अचीव कर पाए. अगर आप वो गोल नहीं रखोगे जो कर पाओ, तो गोल कभी अचीव नहीं होंगे. तो जो गोल अचीव आप लेट्स से कि अगर आपने लेट अस से इफ यू आर इन ए बिजनेस, most of the time I give example to business because I do a lot of coaching on business part, right? So let us say कि अगर आप आज 1 करोड़ कर रहे हो तो कल आप 1000 करोड़ करोगे, right? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन एक साल में नहीं हो सकता मे बी. और अगर आपने वो ऐसा गोल बना लिया, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ गोल यू हैव सेट, सो बीच में वो डिरेल हो जाएगा एंड देन यू विल लूज आउट योर मोटिवेशन. तो आप कभी उसको ट्राई ही नहीं करोगे.
right? I've seen people failing miserably. So is it possible? Have others done it successfully? ये भी ध्यान में रखना है आपके कि दूसरे लोगों ने क्या ये सक्सेसफुली किया है. डू यू हैव द नेसेसरी नॉलेज, कि आपके पास नेसेसरी नॉलेज है उस गोल को अचीव करने के लिए, एबिलिटीज हैं या रिसोर्सेज हैं, राइट? और जो आपको विल दैट मीटिंग दैट गोल चैलेंज यू विदाउट डिफीटिंग यू, आपको चैलेंज करता है वो गोल. हाँ, अगर आज की डेट में लेट अस से कि आज की डेट में अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो 5 करोड़ तो नेक्स्ट ईयर तक हम कर सकते हो. दिस कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज अचीवेबल. सो दैट काइंड ऑफ गोल, या कोई भी गोल हो आपके आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में. लेट्स से कि somebody wants to learn singing. सो मैं सिंगिंग भी सीख लूंगा, मैं वोकल भी सीख लूंगा, इंस्ट्रूमेंटल भी सीख लूंगा, मैं ये 4 इंस्ट्रूमेंट सीखूं. अरे एक इंस्ट्रूमेंट सीखो 1 साल में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट मेक सच काइंड ऑफ अ गोल विच यू कैन अचीव, एंड देन योर गोल शुड बी रिवॉर्डिंग और रेलिवेंट. And you have to find out what is the reason, what is the purpose or benefit of accomplishing that goal. उससे क्या होगा, आपका जो लक्ष्य को पूरा करने का कारण क्या है, उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है, what is the benefit you are going to get, or what is the outcome you are going to get from that goal, right? So the goal has to be relevant or rewarding, and of course without time bound there is no relevance of the goal, right? वो goal सिर्फ एक statement है, आपका एक piece of paper है, nothing else. So time bound, it has to be, time has to be given, एक उसका dedicated time define करना पड़ेगा कि what is the established completion date क्या होनी चाहिए, and that and does that completion date create a practical sense of urgency. और वैसी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई चलो ये 4 साल बाद करेंगे. तो थोड़ा urgency क्या होता है उस time bound को, जब हम time bound goals बनाते हैं तो completion की date ऐसी होनी चाहिए कि there should be a sense of urgency, right? So these are the SMART goals. Now I would request you, अब यहाँ पे आपके पेन और पेपर का इस्तेमाल होगा. Now creating SMART goals. So let us मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा. अब आपने अपने स्मार्ट गोल आपको अपना बनाना है. let's we'll have 10 minutes, 5-10 मिनट में इसको करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं. एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको. आप स्टार्ट करो. एनीबडी कुछ दिमाग में खुल रहा है क्या आपको इन टर्म्स ऑफ गोल सेटिंग? एनीवन? सो मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं. लेट अस डू दैट. आप अपना कोई भी गोल एक डिसाइड कर लो. अभी जो हमने इतनी बातें करी हैं, या जो भी आपको इसमें से लगता है, या कोई और भी गोल आपको लगता है, एक गोल डिसाइड करो. लेट अस से, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हर स्मार्ट गोल का पूरा एग्जांपल है आपके पास. अब ये एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं आपको. आप अभी करो, आप अभी करो, मेरे साथ करो. अभी आपका एक वो ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा. उसके बाद आप यू कैन बिल्ड ऑन टू दैट, राइट? एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन टॉक टू मी आफ्टर द सेशन ऑल्सो. सो स्मार्ट गोल एग्जांपल्स. ब्रॉड गोल क्या है? मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको आप समझते हैं. आप अपना स्टार्ट कर दो, अपना गोल थिंकिंग हैट चालू कर दो आप. सो आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस. लेट अस से आपका गोल ये है कि आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस. एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको. इसी तरह से आपको ये एक गोल है, आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस. सो आई वांट ईच एंड एवरीवन टू टेक देयर इंडिविजुअल गोल right now. Don't worry about the time. And then create it specifically. अब यहां पे क्या क्रिएट किया है? मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है. अब नाउ यहाँ पे स्पेसिफिक है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. Let us say I will sell handmade cards through Etsy.com. Etsy.com is an international website where all these things are being sold, right? So I will sell handmade cards through Etsy.com. This is very specific goal. So आपने अपना गोल ले लिया, अपना respective goals. Give them the specific हो जाओ उस गोल को लेके क्या करना है.
यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक कर दिया मैंने. विनय रेज हैंड. विनय, यस, टेल मी. स्मार्ट गोल्स बनाओगे तो उसमें लाइफ टाइम गोल्स का पॉइंट नहीं आएगा क्या? लाइफ टाइम गोल्स आएंगे ना. तो लाइफ टाइम गोल्स में मैंने अभी एक पर्सपेक्टिव दिया है. तो अभी हम स्मार्ट गोल बनाने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो लाइफ टाइम गोल्स में कैटेगरी की बात मैंने करी है. काफी कैटेगरीज दी है. अच्छा, ठीक है. So either you can take that category of those goals, whatever. So goals can be your independent goals. So specific, I'll sell handmade cards through Etsy.com. And then measurable में हम क्या बोल रहे हैं? Main goal क्या है? I want to start a business. Measurable, I will be ready to take my first Etsy order within 4 weeks. 4 हफ्ते के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आई विल बी रेडी कि मेरा पहला ऑर्डर आ जाए मेरे को. एंड आई विल एम टू सेल ए मिनिमम ऑफ 5 कार्ड्स पर वीक. तो दिस इज मेजरेबल. आप मेजर कर रहे हैं ना कि मैंने कितना बेचना है. मेरे को 5 कार्ड्स मिनिमम बेचने हैं पर वीक. तो इससे मेजर हो रहा है. स्पेसिफिक, मेजर. सो आप अपने गोल लिखिए, उसको स्पेसिफिक बनाइए, फिर उसको मेजर करने का पैरामीटर डालिए इसी तरह से जैसे मैंने यहां पे डाला है. नेक्स्ट इज अटेनेबल. अटेनेबल है अचीवेबल. उसके लिए क्या करना है? आई विल, लेट्स से यहां पे जैसे इसमें मैंने बताया, आई विल गेट सेटअप एंड सेटअप etsy.com. पहले अकाउंट बनाऊंगा या व्हाटएवर, उसको सेटअप करूंगा. And I will build an inventory of 30 handmade cards. Inventory 30 cards की inventory बना लूंगा. And then I will promote my business and build customer relationship through word or mouth. मैं word or mouth से बात करूंगा, लोगों से बात करूंगा, रेफरल मांगूंगा, लोकल नेटवर्किंग इवेंट में जाऊंगा या लोकल नेटवर्किंग करूंगा. कैसे उसको अचीव करना है? Your goal can be anybody, any personal goals भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, career related, education related, artistic related, anything you can take right now and create smart goal. Make it smart. Once you make it smart, you will achieve it. There is no doubt about it. And then relevant. Selling handmade cards will allow me to benefit financially from my favorite hobby. This is my hobby also. This can be a goal also. And मेरे को financially भी वो help करने वाला है. तो ये बहुत ही relevant है ये goal. मेरा broad goal क्या है? I want to start a business. मैंने specify कर दिया कि handmade cards बेचने हैं. मैंने specify कर दिया कि मेरे को Etsy पे बेचने हैं. मैंने ये specify कर दिया कि 4 हफ्ते में order आना है और मैं 5 cards बेचूंगा हर हफ्ते. उसके बाद मैं जो है Etsy में इन्वेंट्री बनाऊंगा 30 कार्ड्स की और मैं प्रमोट करूंगा अपने बिजनेस को, कस्टमर्स को, रिलेशनशिप बढ़ाऊंगा, वर्ड और माउथ से बोलूंगा, रेफरल लूंगा, लोकल नेटवर्किंग करूंगा. एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ रेलेवेंट कि मेरे को ये फाइनेंशियली बेनिफिट करेगा और टाइम बेस्ड होना चाहिए. तो टाइम बेस्ड है जो माय Etsy स्टोर विल बी अप एंड रनिंग. मेरा Etsy स्टोर है वो सेटअप हो जाएगा और it will be created within 4 weeks. 4 हफ्ते में मैं ये सब कर लूंगा. And I will have an inventory of 30 cards to sell within next 6 weeks. मेरे पास 30 कार्ड हो जाएंगे बेचने के लिए. 30 कार्ड्स की इन्वेंट्री बन जाएगी और मैं जिसको आने वाले 6 वीक्स के अंदर मैं उसको सेल करूंगा. सो टाइम भी डेडिकेट कर दिया हमने, टाइम बाउंड भी कर दिया इसको. सो इसी तरह से आपको अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना है, मेजर करना है, अटेनेबल करना है, रिलेवेंट करना है और टाइम बाउंड बनाना है. Now, how many people are actually doing it? They have written their goal at least, and their thinking had. Okay, great, Vinay, you are doing it. Okay, जब हम ये स्मार्ट गोल बनाते हैं, now before I go ahead towards the end, और ये कैसे बनेगा, वो कैसे आता है ये भी मैं शेयर करता हूं. In the meantime, any sharing
कुछ आपको कुछ खुल रहा है क्या? कुछ आप बना पा रहे हो क्या? Anybody? Anybody? Have you written it? Have you written at least your goal? कि क्या करना है? Rajvin, have you written your goal? Yes, I have written. Okay, प्रीतम जी. Okay. अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप एक आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज अ ब्रॉड गोल. अब ये अगर आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट, राइट? So, टेल मी. Sandeep ji, for me, I've combined two goals into one. Number one is I want to win Miss Amazing Malaysia, and number part of that is I want to empower people, and I want to be successful at my career at age 42. Good. Very good. So we need to use that framework of a SMART goals framework, right? Specific. Yeah. Anything, any goal which you are doing it, SMART, no? Specific, measurable, attainable, relevant, time bound, right? Now, हमारा broad goal क्या था? हमारा broad goal क्या था? I want to start a business. Now, start a business within a month. I'm going to. So ये पूरा अगर हम इसको combine करते हैं SMART को, so क्या निकल के आएगा? Within a month, I am going to get set up is to sell handmade cards on Etsy, which will allow me to benefit financially from my favorite hobby. Within 6 weeks, I will have an inventory of 30 handmade cards to sell, and will aim to sell a minimum of 5 cards per week, building customer relationship through word or mouth, referrals and local networking, right? उसी को मैंने यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए हिंदी में भी लिख दिया है. So this is going to be your SMART goal. So अगर हम ये SMART वाला framework use करेंगे तो ultimately you will include each and everything, and your goal would be very, very attainable. ये आप achieve करोगे, right? Making sense? Yes or no? Yes, yes. Okay. All right. So this is how you make your goal SMART. Okay. Now, before we end, I would like to take you again through a small process. Can we take 5-7 minutes more, Shabana ji? Yes, Sandeep ji. Please. Okay. All right. So let's create another perspective onto it. Now, what I'm inviting you is to do visualization of your goals. अभी हमने कुछ लिखा है अपने गोल के बारे में, स्मार्ट गोल के बारे में हमने समझा है, उसको हमने कुछ शेप देने की कोशिश की है, राइट? सो लेट अस विजुअलाइज दैट गोल. व्हाई विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन क्यों? वो इसलिए कि द वे वी see we talked about, आपने ध्यान दिया होगा, I talked about big picture in the beginning, right? So अगर हम visualize करते हैं, so we become more mindful of our thoughts and feelings, right? And we can correlate with our goals. So visualization of goals अगर आप करते हो, so it will give you more power to you to act on it, right? So let us come to that state of mind, right? So I would request everyone to close their eyes, wherever they are right now. अगर कुछ लोग ड्राइव भी कर रहे हैं तो I would request कि साइड में गाड़ी खड़ी कर दो अगर पॉसिबल है तो, right? It's going to be again a very, very important process. It can be a powerful for most of the people, right? So let us sit in a very, very comfortable position. And why we are doing it? Because visualization is just another form of focusing your attention onto your mind,
right? And it'll give you more perspective. It will give you a clarity of your goals. You will see your goals, you being achieving them. Okay, so थोड़ा meditative mode में आ जाते हैं. Sit in a comfortable position, very comfortable position, whatever comfortable position you can have. And सिर्फ लेटना नहीं है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं या बेड पे बैठे हुए हैं, I'm okay with it. Right, so and then close your eyes. Close your eyes. Let's focus on your breath. Take it 2 to 3 times. Take a deep breath. Deep breath. Going in, going out. Be as relaxed as possible. You have written down some goals, or a couple of them, maybe one goal. Right. Now we will start by, let's say, because here my emphasis is to give you certain perspective in terms of it will go to your subconscious mind, right? So let us start first. Let's be grateful. Pick three things which you are grateful for. Practice your gratitude here before we go further. Pick three things which you are grateful for. Any three things which you are grateful for. Be relaxed, as relaxed as possible. Your eyes should be closed. Now, spend a minute thinking about your goals, or those goals at least आज के अभी के जीवन तक, जो आपका जीवन जो आप अभी तक जिया है जो आपने, वो किस वजह से आज आप यहां इस मुकाम पे हो as of now. Those goals, think of those goals first. Or maybe that could be goals or memory, whatever it is. Just reflect on those memories or goals. Your eyes should be totally closed. As you are reflecting those goals or memories, imagine, visualize a colorful light coming onto you, filling your body. उस लाइट का कलर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर हो सकता है. A colorful light is coming and filling your body. Now this colorful light is healing your thoughts, healing your feeling, and healing your body. Feel that. You don't have to utilize that colorful light. Choose whatever vision comes to you. Whatever vision comes to you in your mind. At this point of time, you might feel
maybe a certain protective energy is around you, or maybe a protective soul is embracing you, and you are in good hands. Select the vision जो अभी आपने resonate किया होगा, वो vision. Select that vision which feels right for you. Now, picture on the goals. जो भी गोल आपने select किया है या vision select किया है या आपने जो लिखा है, now picture the goal you want to achieve, and also picture changes you would like to do to achieve that goal in your life. These goals can be short-term goals, can be long-term goals. See them in front of you. Those goals which you have written right now, you are actually seeing them in front of your eyes. Visualize those goals that has happening, that has already happened. At this point of time, you have achieved them. And you are celebrating a victory. Visualize it right now, right away. Celebrate your victory in achieving your goals. You have already achieved it. Whatever goal you have set, it is already achieved. Be in that mode for a while. Have that feeling of victory, a sense of achievement, sense of fulfillment. Be that state for a while. And now, slowly, rub your hands and slowly open your eyes. Okay. So this is how we visualize our goals. I want you to be in that mode the whole day. Celebrate your victory. Let's work on your goals. Let's work it together. And with this note, I end this session. Any sharing, anything which you like to interact with, you're most welcome. And then we are going to close. Thank you so much. That was a wonderful session. To be very honest, although I was not participating actively, not actively doesn't mean that I was not doing the work, but not saying and sharing here. However, that makes a lot of sense that whatever you shared, starting from the lifetime goals, actually that talks to the purpose of why you want to achieve it. And the last
the second and the foremost part was also uh, the the uh, the relatable goal. R stands for relatable goals. So that is also something quite gives a sense of why we want to achieve what we want to achieve. Right. There is only one. There is only one perspective that I really wanted to put forward. In the example that you provided, so goal for me is an action. Is not an action. I mean, it's my view. But whatever you say that I want to sell how many things to a particular website, it may Right. not be it may not be a goal. Goal could be something which can be seen. So how many products that you are ready to sell. It may or may not be through a particular website. That is an action. That is one of the Yeah, it's actions of a just an particular example, website. and it can be I know, modified. I know. That's what I'm saying. That the example that you provided, as per my view, that is not a goal. That is an action. That's the only perspective I wanted to talk. Yeah. Sure. Thanks. Not an issue. Okay. Anybody else? Anybody else would like to share anything? Hello, sir. It's a good session. Its size is for all items. क्या बोल रहे हैं प्रीतम जी? Its size site is for all items. Mostly ये artistic या उसके लिए होते हैं. I'm just giving an example. Etsy है. Etsy is one of the website. I want to sell actually paintings. हाँ, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये प्लेटफॉर्म. Thank you. उसके लिए बहुत बढ़िया है. Thank you. All right. So Thank if you. nobody is sharing, then we can end. Rajvin, thank you so much